Shanti, Shanti, Shanti. Honorable members, I have to inform members that in view of the limited functional time available and the special seating arrangements made for the current session, I have acceded to the request made by the Minister of Parliament Affairs for permitting the Minister of State and the Minister of Parliament Affairs to lay all the papers listed under the heading "Papers to be laid on the table" in the list of business for the day in the name of other ministers till this session because of the COVID situation. Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan. Chairman, respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleagues Sri Nityanand Rai ji and Sri Rajiv Chandrasekhar ji, I lay on the table of the House the papers listed against their names at serial number 1 and 2 in today's revised list of business. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Sri T.G. Venkatesh. Respected Chairman, sir, Namaste. I rise to present the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. 304th report on the action taken by the government on the recommendations, observations as contained in its 293rd report on the subject's status of aviation connectivity in the country. 305th report on the action taken by the government on the recommendations, observations as contained in its 294th report on the subject development and conservation of museums and archaeological sites, challenges and opportunities. 306th report on the action taken by the government on the recommendations, observations as contained in its 295th report on the subject potential of tourist spots in the country, connectivity and outreach. 307th report on the action taken by the government on the recommendations, observations as contained in its 296th report on the subject's role of highways in national building. 308th report on the action taken by the government on the recommendations, observations as contained in its 297th report on the subject functioning of Airports Authority of India, and 309th report on the action taken by the government on the recommendations, observations as contained in its 300th report promotion of infrastructure in India's maritime sector. Thank you, sir. I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 1st of February has allocated time for government business as follows. Discussion on motion of thanks on the President's address, 12 hours. General discussion on the Union Budget 2022 and 23, 11 hours. The committee also recommended that the private members' business on Friday, the next Friday, 11th of February, may be dispensed with to complete the general discussion on the Union Budget on that day. Honorable members, you are all aware the sittings of the House from today, 2nd February, onwards will be from 10 a.m. to 3 p.m. Rule 180 of the Procedure of Rules on Conduct of Business in Rajya Sabha provides for admitting call attention notices, and Sub-Rule 5 states that they should be raised at 2 p.m. and at no other time during the sitting of the Council. In view of the change in the time of the sittings, the House during this session, for the sake of convenience, calling attention shall be raised in the House at such a time as may be decided instead of strictly at 2 p.m. as provided in the rules. Similarly, Rule 180C(1) provides that the time for submitting notices for special mention shall be up to 5 p.m. on the day for raising the matter on the next day of sitting. Again, in view of the change in timings, it has been decided that the time for submitting notice of special mention shall be up to 10 p.m. on a day for raising the matter on 1 p.m. on a day for raising the matter on the next day of the sitting. I hope the House accept these modifications regarding 0 hour, keeping in view the time constraint. It will be taken up.
The first half an hour of the sitting, I appeal to members that instead of taking 3 minutes, please take 2 minutes so that more and more members get an opportunity. And there were some people who have given 267 notice. I have not admitted also. You have time for a budget, and you have discussion for the discussion on budget. Yes. Yeah. The notice is the same notice like last session, concern over alleged surveillance using Pegasus spyware. Honorable Deputy Chairman Sri Harivamsa ji, Leader of the House Sri Piyush Goyal ji, and Leader of the Opposition Sri Mallikarjun Kharge ji, leaders of various parties and groups, and honorable members of this August House. I extend a warm welcome to all of you to this important budget session, 256th session of Rajya Sabha. As the chairman of this August House, I wish to present a brief account of the extent in which this session is taking place and in relation to the past and obligation of this House for future of our country and its people. This session is happening almost in the midst of the 75th year of country's hard-fought independence. The sole objective of the long-drawn freedom struggle was Swaraj, in which people are the masters of their destiny through parliamentary institutions and elected representatives. Over the years, this year also, marks the 70th year of elections in the country since the elections to the first Lok Sabha during 51-52. This session accordingly is being held in the confluence of two such historic events and hence assumes significance. In addition, any budget session offers a broad guidance to the course of economic progress over the next financial year. This budget session acquires added significance as the nation is collectively keen on enduring to lift the national economy from out of the adverse impact of the COVID pandemic over the last 2 years. Threats to the country are still continuing with the third wave of the pandemic at present. The world is living under uncertainty on account of this pandemic. This reminds all of us our responsibility to do the needful to overcome this challenge and secure the socio-economic transformation of our country, which is work in progress. It is appropriate to reflect on how this August House has functioned during 75th year of independence. So far, during the first winter session, the first in this last winter session, the first in this historic year, this August House has lost 52.10% of the valuable sitting time due to disruptions and forced adjournments. During the preceding monsoon session last year, the loss of functional time of this House was as high as 70.40%. This trend of disruption is highly disturbing. I refer to the same with fervent hope that we all reflect on the same and conduct ourselves in a manner befitting the historic time that we are passing through. During the last 70 years of election, the voter turnout has increased from 45% in the elections to the first Lok Sabha to over the highest ever, over 67% in the 17th elections in 2019. This marks an increase of 50% in voters' participation. The voter turn in polls to the state assemblies is even higher. This goes to prove that citizens of our country continue to impose their faith in democracy. In this historic year, the need of the hour is for the 5,000 MPs, MLAs and MLCs to resolve to return to the people the favor they have been relentlessly doing by nurturing our democracy. The only way of doing so is to conduct ourselves in a manner befitting the trust the citizens still have in our parliamentary democracy. Having said so, I would like to remind that this budget session last year, the House clocked a productivity of 93.50%. The spirit of occasion demands that this House turns out the best performance during the important budget session. Honorable members, this is the 6th session being held since the outbreak of COVID pandemic. Given the highly infectious nature of the variant of corona virus during the current third wave, both the houses are meeting in shifts, first adopted during the monsoon session of 2020. On account of this, we get to meet 1 hour less for each sitting during this session. During these 10 sittings of the first of this session, part of the session, we are left with only 23 hours of functional time and also the 0 hour, the question hour and private members' business on one day. Keeping this view, the government clarified yesterday
that it does not intend to propose any legislative business for the first part of this budget session. Accordingly, the Business Advisory Committee has allocated time. Two important overreaching decisions enable the members to raise every issue referring to the spirit of rules and conventions. These 0 hour and question hour are very important. I also have some important information to share with all of you regarding function of standing committees. I need not repeat the importance of these committees because they are for 24/7 functioning of the Parliament. I am happy to inform that the average attendance of the members of the meeting has increased from 47.64% in 2016-17 to 48.79% in 1920. It fell marginally during 2021, but the average attendance in 255 sittings during the 1921 has been 47%, despite the long spell of COVID pandemic. There is also a welcome improvement showing the deep commitment of each one of you to your parliamentary duties. With regard to the duration of the meetings of the 8 committees, the average duration of meetings improved from 1 hour 48 minutes to 2 hours 10 minutes during 1920, marking an increase of 22 minutes on average per meeting. This is a welcoming sign. The Home Committee reported the highest increase of 66 minutes per meeting, followed by the Committee on Transport with 44 minutes increase, Commerce 42 minutes, Education 29 minutes, Science and Technology 22 minutes. Similar trend prevailed during 2021. Such substantial increase in the duration of the meetings meant that the resources spent on the meetings of these committees are being better utilized. I compliment the chairmen and also the members of these committees for their efforts in this regard. Honorable members, our country has demonstrated remarkable resilience in vaccinating the people. I hope that each one of us also will take initiative to take care to see that people in our respective areas are all, wherever eligible, they are vaccinated immediately. The Secretariat issued guidelines for regarding COVID compliant behavior of to avoid the infection. I urge all of you to take all precautions suggested. I fervently appeal to all of you to ensure a safe and productive session, and once again appeal members, keep the distance, safe distance or secure distance, whatever is suggested, please do accordingly. Then Sri Rajamani Patel, 2 minutes please. माननीय सभापति जी, रीवा हनुमाना 90 किलोमीटर की 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में 5000 से अधिक पैस लगाए जा चुके हैं। एमपीआरडीसी के अधिकारियों का कहना है कि 14 जून 2019 को निरीक्षण में लगभग सभी ओवर ब्रिजों पर सड़क के बीचों बीच डामर के उबड़ खाबड़ टीले एवं सड़क निर्माण के कच्चे मटेरियल जगह जगह उभरा हुआ है। खुदरा पर निरीक्षण अनुबंध शर्तों के अनुसार टोल वसूल रही विंध्या एक्सप्रेस कंपनी को प्रतिवर्ष राजामणि जी पढ़ना नहीं कराना पड़ रहा है। एक्सप्रेस कंपनी को प्रतिवर्ष निरीक्षण कराना अनिवार्य है। मॉनिटरिंग एजेंसी के अधिकारियों को रोड का निरीक्षण कराना होता है। खुरदरा पर निरीक्षण के समय सड़क खराब होने के कारण ब्यौरा नाले के तत्काल टोल वे की वसूली रोकना होता है, लेकिन कंपनी के द्वारा अनुबंध का पालन नहीं Nobody should read. किया जा रहा है। मनमाने ढंग से टोल वसूला जा रहा है। भारी वाहनों के श्री अजय प्रताप सिंह, not there. Sri Wilson, P. Wilson, please. Padna nahi, I told you, within 1 minute or 1.5 minutes, 2 minutes. In many districts in Tamil Nadu during month of October and November 2021, which caused heavy, extensive damages to the property and other critical infrastructure. The government of Tamil Nadu submitted 3 memorandums to Government of India seeking financial assistance of 6,230.45 crores towards relief and restoration. The interministerial central team visited the affected areas in Tamil Nadu in the month of November 2021, made an on-spot assessment. It is more than 70 days after the visit of interministerial central team. The union government has not released any financial assistance in response to the 3 memorandums presented by the state. With the hope that the union government will release the relief expenditure, the government of Tamil Nadu has already incurred an expenditure of 9,699.67 crores under the STRF, which includes the COVID-19 management expenditure and disaster relief already provided. Hence, the government of Tamil Nadu is already facing severe financial crunch due to the COVID-19 pandemic situation.
Hence, I urge the Honorable Union Minister for Home Affairs through this August House to appreciate the urgency for the release of the assistance of 6,203.45 crores for providing immediate relief to our state, and also to immediately pay all the outstanding amounts due under the State Disaster Response Funds to Tamil Nadu. Already we have given 2 representations to the Home Minister on 17/1/2022 and Honorable Prime Minister on 29/12/2021 by our Honorable Chief Minister. Therefore, I request this August House to ponder upon the Honorable Union Minister to release these funds and help the financial problems of Tamil Nadu. Thank you, Chairman. Vijay Sai Reddy. Attention of the Leader of the House, sir. Sir, Tirumala is one of the revered religious shrines for Hindus across the world, sir. Sir, TTD is a renowned where it undertakes social, educational, religious, charitable and cultural activities, sir. For conducting these activities, it needs huge financial resources, including the donations from abroad, from NRIs. Sir, Ministry of Home Affairs has withheld the renewal of FCRA registration for TTD on purely technical grounds, even though all requirements of renewals have been fulfilled. Sir, as of today, up to 31st December 2021, 13.4 crores of funds are in the designated foreign contributions in the bank account. So the importance of the temple, it is very important for the Hindus, and BJP, I'm referring to BJP, has an Act East policy. I request the BJP to adopt look south policy also and take care of this Tirumala Tirupati Devasthanam. BJP claims that it is a torchbearer of Hindu nationalism. Please, where is it? No where mention is the of Hindu parties. nationalism shown in the case No of mention TTD? of parties. This will not go on record. Sri Dr. Narendra Yadav. Attention. Right. Dr. Narendra Yadav. Yadav ji, please. Bobby. Okay, बोल सकते. You can sit and speak. Okay. Sir, I would like to thank you very much, sir. I would like to invite your attention to the fact that during the natural disasters, several of our historical monuments get destroyed. This happened recently. Last year it happened in Gujarat, and it's happening year after year. I strongly recommend to the government that all the national heritages and the sites of national importance, monuments of national importance, they should be systematically analyzed for their susceptibility to disasters. They should be graded accordingly, and the policy towards preservation of monuments should be integrated as a part of the overall disaster management policy. This is very, very important. I strongly recommend that, sir. Thank you. Dr. Fauzia Khan and Sri Sushil Kumar Modi, Sri Sanjay Singh to associate. Fauzia Khan from Lok Sabha. Lok Sabha Chamber, sir. Sir, the recent recruitment process of the railway examination has exposed the deeper issues of unemployment and a failed education system. More so, sir, in Bihar and Uttar Pradesh. Several student organizations, sir, including the All India Student Association, has called for a statewide bandh to protest against the irregularities in the Railway Recruitment Board's non-technical popular categories examination 2021. Protesters have burnt effigies of our Honorable Prime Minister and have vandalized trains. A passenger coach in Gaya last Wednesday was set on fire, sir. They had advertised about 35,281 vacancies for Group C jobs, sir. And they had also promised to select 20 times the number of vacancies for the second round. What is your suggestion, ma'am? Sir, the suggestion is that the overall issue of unemployment, particularly in Bihar, must be looked at, and the irregularities that are alleged by the students in this examination must be examined and corrected.
Right, you, sir. Sushil Kumar Modi to associate. रेलवे मंत्रालय को सुझाव है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है जिसमें मोर देन 1.25 लाख स्टूडेंट्स आर देयर, पहले एक एग्जाम अनाउंस किया गया था. ऑल ऑफ अ सडन ऑन 24 जनवरी इट वाज अनाउंस दैट देयर विल बी 2 एग्जाम. तो मेरा आग्रह है कि एक एग्जाम ग्रुप डी का होना चाहिए. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एग्जाम. दे आर नॉट आईएएस और आईपीएस एग्जाम. 10th क्लास के लड़के से पहला डिमांड ये है कि ग्रुप डी के लिए इंस्टेड ऑफ 2 एग्जाम देयर शुड बी 1 एग्जाम एंड वाज अनाउंस्ड अर्लियर. एंड एज फार एज एक मिनट और सर, एक मिनट, रिगार्डिंग एनटीपीसी जो 35,000 सीट्स हैं उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए. 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है. तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, it is actually only 3,50,000. So I appeal the railway ministry to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. इसलिए मेरा आग्रह है कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए ये जो 2 डिमांड है, ग्रुप डी का एक एग्जाम एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे सर कि ये जो छात्रों का जो आक्रोश था सर, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई गई, पहले तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए. एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला है सर. इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में. तो इसलिए मान्यवर उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए. प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर. उनको घरों में घुस के मारा गया, उनको घरों में घुस के लाठियों से पीटा गया सर. और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे देश के नौजवानों की समस्या को, छात्रों की समस्या को सुनने के बजाय सरकारें अगर उनसे लाठी और मुकदमों से निपटेंगी तो काम नहीं चलेगा. 1000 लोगों पे एफआईआर हुई सर. 1000 छात्रों पे एफआईआर हुई है. रविंद्र कुमार वापस होनी चाहिए. रविंद्र कुमार Please. Thank you, Chairman, sir. The Madiga and Relli communities are least progressed in the society. They are forced to profess unclean and filthy occupations such as cleaning of toilets, etc. These groups of scheduled castes in Telugu-speaking states have been demanding subcategorization of scheduled castes. Due to non-categorization, only certain scheduled castes are reaping the benefits of the reservation and other groups are unable to reap the benefits of the reservation. Due to this inequality is in rise in terms of education and employment, etc. This has to be solved by a suitable legislation as well as the executive measures. In the year 1999, TDP under the leadership of Chandrababu Naidu Garu classified ABCD groups and implemented up to 2004. Supreme Court quashed this classification, stating that Parliament can only do enactment. The Legislative Assembly of AP passed unanimous resolution on 10/12/2004 and also state the matter to take up the Parliament and pass an act. Categorization of the scheduled caste into groups for equal distribution of reservation benefit. The Legislative Assembly of Telangana State passed a resolution on 29/11/2014. The Congress Party also issued about the classification in their manifesto. The National Commission to examine the issue, subcategorization scheduled caste in Andhra Pradesh was set up on 16/11/2006. Justice Usha Mehra as its chairperson. The subcommission recommended that Article 3441 of the Constitution of India to be amended for subcategorization. Right. Sir, there is one such judgment pronounced by E.V. Chennaiah and versus State of AP by the Constitutional Bench upheld that states have no such power to provide reservation within the reservation. Last year, in a judgment delivered by the 5 judges bench. Time is over. Sir, finally, it's an important issue, I do admit, but I request the government to take necessary steps to provide reservation. Question hour. No, time is over. It's not going on record, Ravindra Kumarji. Sri Derek Oberyn. Not present. Minister. Supplementary. Thank you, Chairman, sir, giving the opportunity to put a supplementary question. This.
I am very happy and also congratulate the Modi government and also Honorable Minister taking such kind of effort to say the Beti Bachao, that kind of program. But I have seen that reply. You are given the detailed things of what are the measures taken by the Modi ji government to save the female child. That is the very important thing. But I want to know from the Honorable Minister, see, you know very well in Tamil Nadu, when this kind of situation took place 91, 92 at the time, Honorable Amma took a cradle baby system to save the female child. That is the scheme that she brought and introduced, saved so many female girls and give good education. Can the minister come forward this kind of scheme to implement throughout the India to save the female child? That is I want to know. Thank you. This is your suggestion. Please. The honourable member's suggestion and the concern that he has expressed. So under this scheme, the democratization of policy measure is such that every district can use any measure that they deem fit, including a state government can take any decision they may deem fit to ensure that the girl child is safe. This particular suggestion of the honourable member shall be communicated to his state government. Thank you. Srimati Chaya Verma. डेरेक जी ने ये प्रश्न उठाया है कि कितने प्रतिशत राशि धनराशि महिला बाल विकास के प्रचार प्रसार में खर्च हुआ। मंत्री जी का जवाब मैंने पढ़ा, इसमें जवाब में आया है कि 20-21 में 58% राशि महिला बाल विकास का जितनी राशि एलोकेट किया गया उसमें 58% राशि विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार में खर्च किया गया। डेरेक जी है नहीं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ये है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या आने वाले समय में थर्ड जेंडर को महिला बाल विकास के आंगनबाड़ियों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में रखा जाएगा क्या? ये मैं जानना चाहती हूँ। माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया कि इस स्कीम के अंतर्गत मात्र प्रचार प्रसार में भारत सरकार पैसा खर्च करती है। मैं उनको इस सदन में अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सरकार 100% 400 से ज़्यादा जिलों में प्रत्येक जिला को 50 लाख रुपए प्रदान करती है ताकि जिला अधिकारी और प्रदेश की सरकार जैसा कार्यक्रम उचित समझे वैसा उसको अपने प्रदेश में अपने ज़िले में वो इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक कि आंगनवाड़ी सिस्टम्स में किसको नौकरी देना, ICDS प्रोग्राम जो अब मिशन पोषण के नाम से जाना जाता है उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार प्रदेश सरकार का है। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया। माननीय मंत्री जी, अभी हाल में परसों ही एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण के लक्षण बहुत चिंताजनक हैं। बावजूद उसके पोषण अभियान के 66% फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। क्या ये सच है? माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि जनवरी 13 पिछले साल हमने पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत नए गाइडलाइंस हर प्रदेश की सरकार को प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात हर माह प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से हम हर घर तक, हर बेनिफिशियरी के घर तक उनके जो लाभ हैं वो पहुँचे, विच इंक्लूड्स राशन। हमें प्रदेश की सरकार ने अवगत कराया है और रिपोर्ट भी उपस्थित करवाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सरकारें विच इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश बेनिफिशरीज के डोर स्टेप तक बेनिफिट देकर आई हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनरेबल श्री वाइको जी। श्री वाइको नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2। Wait, the answer is late, please. माननीय अब्दुल वहाब जी, supplementary. By Muslims, Dalits and tribals, entry level roles in private sector. That's a study by Bhara or my What are discrimination? Studies also prove that there are eligible number of minorities, Dalits and tribals in our celebrated media rooms also. Question is whether the government will give any direction
to the private sector to publish their employees' demography to understand the situation of discrimination, or constitute a committee to study about such discrimination in private sector. Thank you, Abdul Wahab. Honorable Chairman, it is subject to the legislation. However, the government is very sensitive to the issue of the affirmative action, including reservation in the private sector, and has initiated wide-ranging consultations with the view to explore the best possible way to ensure that private sector fulfills the aspirations of the youth. At present, the Constitution does not provide any mandate for the reservation of the jobs for SC, ST or the general, even the general category in the private sector, sir. The reservation of the private sector can be provided by only bringing the legislation in the Constitution, which would therefore require wider discussion, consultation with the stakeholders before we will be taken up the issue, sir. Thank you. Manya Shri P. Bhattacharya ji from Lok Sabha. I would like to know from Honorable Minister. Please put your question. My question is very simple. That is, in so many cases we have seen the Voice, mic is not working. has not yet been followed Please. by the private sector. Manya P. Bhattacharya ji from Lok Sabha. Your voice. Hello. Mic is not working. Please tell. I am speaking. Yes, please. अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज. अभी सुनाई जा रहा है तो? जी हाँ. In so many cases we have seen the private sectors are avoiding to follow the reservation for the youths. Why the government of India is not going to put up a legislation so that all the private sector industry has to follow the reservation policy followed by the government of India and the state government? Thank you. माननीय मंत्री जी. Sir, our honorable member is asking so many questions about the reservation in the private sector. But with regarding the affirmative action for the SC and ST and other general caste private sectors, coordination committee is there. It was set up by the Prime Minister's office in 2006 under the chairmanship of the Principal Secretary of the Prime Minister, sir. It had held 9 meetings from the 2006 till 2019, sir, and it is received suggestions from the various stakeholders, sir. Even for the reservation of the ST and ST, there was a coordination committee to resolve the unemployment problems. The committee held several meetings, sir, and advised the taken the appropriate action on the issue of the consulting the concerned departments and HRs of the private companies. They provide the employment for the candidates who belong to SC, sir. Even our government has, by Honorable Prime Minister Narendra Modi, is advised to promote and set up more skill training programs in all the sectors of the entire private sector, sir. Thank you. Dr. Sivdasan. Dr. Sivdasan. Please. Decreasing number of jobs of SC/ST community in private sector the last 5 years? The question will not arise, sir, because we have no such statistics, sir. Question number 3, Dr. C.M. Ramesh. माननीय मंत्री जी. First supplementary. Extending autonomy accompanied by physical responsibility to the Panchayat Raj department, Panchayat Raj system in the country. सभापति महोदय, पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए राज्य माइक पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए राज्य विधानमंडलों से प्राधिकरण प्राप्त करके पंचायतों को सदृढ़ वित्त साथ ही पंचायतों के निर्दिष्ट करो शुल्कों पदकर का प्रावधान है। 5 वर्षों में पंचायतों वित्तीय स्थिति की समीक्षा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी की जाती है। थैंक यू।
माननीय सदस्यगण, जहां आपकी एलोकेटेड सीट से कृपया वहां बैठें और जो सदस्य गैलरी और लोकसभा में बैठे हो कृपया बैठकर ही सवाल पूछें। माइक से आवाज आएगी और सुनाई देगा। कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज। सर गैलरी सर, सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, to improve effectiveness of governance mechanism, in some states, it is gathered that the certain minimum qualifications for the representatives have been prescribed. Whether the government may consider this aspect and also consider providing training to local representatives to ensure more effectiveness of Panchayat Raj system in the country. Thank you. सर, पंचायत सदस्यों को न्यूनतम अर्हता का जो सब्जेक्ट है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार निहरता तय नहीं कर सकती क्योंकि चुनाव लेना है राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन चुन के आने के बाद पंचायत राज मंत्रालय की एक योजना है RGSA, उसमें हम लोग 2 तरह के प्रशिक्षण जो चुन के आते सदस्य उनको देते हैं। इसमें बेसिक ट्रेनिंग, जो सदस्य चुन के आते हैं उनके अधिकार क्या है, तो चुन के आने के बाद किस तरह से गांव के विकास में योगदान दे, उसका प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। उसके 2 साल के बाद में रेफरेंस ट्रेनिंग दी जाती है। जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज के माध्यम से किस तरह से जुड़े, अपने गांव का विकास करने के लिए सारे जो पोर्टल है वो किस तरह से आत्मसात करे, इसका ट्रेनिंग 2 साल के अंदर दिया जाता है। और ये केंद्र और राज्य सरकार की पुरस्कृत योजना है और ट्रेनिंग देने का काम राज्य सरकार करती है। धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। सर गैलरी नंबर 4 सर, गैलरी नंबर 4 सर, प्लीज। हाँ, फ्रॉम गैलरी, यस सर। Sir, in view of the constitutional amendments, the Panchayat Raj institutions are strengthened, but in respect of Andhra Pradesh, there is a complaint that the funds released for the Panchayatis has been diverted and withdrawn from all the Panchayati accounts. If that is so, the Panchayat institutions will be weakened. So, is there any steps have taken to rectify it and to advise the government of Andhra Pradesh? Thank you. Please be specific in your question. Government of Andhra Pradesh not to withdraw the amounts from their accounts with respect to Gram Panchayats. Please. सर, इसकी समीक्षा करके अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार से जानकारी लेके उसके बारे में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हम लोग उचित निर्देश जारी करेंगे। माननीय राकेश सिन्हा जी। महोदय, मैं जानता हूं कि पंचायत राज्य का विषय है और अलग अलग राज्यों में पंचायतों के कुछ अलग अलग कानून, नियम और कन्वेंशंस हैं। क्या भारत सरकार या मंत्रालय इस बात की व्यवस्था करेगी कि अलग अलग राज्यों के पंचायत के चुने हुए सदस्यों का अनुभव दूसरे राज्यों में हो, जिससे कि पंचायत की एफिशिएंसी और पंचायत का जो कन्वेंशन है उसका विकास हो सके? अगर एक छत्तीसगढ़ के पंचायत में कोई कन्वेंशन है और पंचायत के कार्य करने का तरीका है, वही तरीका यदि असम में, धन्यवाद राकेश, इसके लिए मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये प्रावधान है, जो पंचायत अच्छी काम करती है वहाँ पे कुछ लोग जाते, जैसे मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दूंगा, हिरवे बाजार पंचायत का, वहाँ पे बहुत सारे राज्यों से वहाँ पे जो अच्छा काम हुआ है वो देखने के लिए दूसरे पंचायतों के सदस्य जाते हैं। डॉक्टर अमर पटनायक जी। Sir, we know that panchayats have not been transferred finance, functionaries and functions. But now the biggest question is for their inclusion in Digital India campaign that is being talked about everywhere. What is the plan of the ministry? सर, ग्राम स्वराज के माध्यम से पंचायत राज मंत्रालय में लगभग 2 लाख पंचायतें अब तक जुड़ी हुई है। बाकी बचे हुए पंचायतों को ग्राम स्वराज के माध्यम से हम लोग जोड़ने के बारे में हमारा प्रयास शुरू है। ये सारा जो पोर्टल है वो तकनीक के माध्यम से पंचायतों को जोड़ के कम से कम
वहाँ पे भ्रष्टाचार हो, इसके लिए ये हम लोगों ने कदम उठाया है और इसका अच्छा रिस्पांस हमको मिला। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4 चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय चौधरी साहब। महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहता था, उसका जवाब माननीय मंत्री ने सही नहीं दिया, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री, मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी ने कि जो आपने जवाब दिया है उसमें कहा है कि क्राइम इन इंडिया में ये आप प्रस्तुत करेंगे। हम लोग क्राइम इन इंडिया कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। जवाब मांगा गया है हाउस में, जवाब हाउस में आना चाहिए था। लेकिन आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि माननीय मंत्री से कहें कम से कम ऐसा जवाब दें कि हम लोग उसको जान भी लें। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कि नकली नोटों के बारे में जिस प्रकार से ये नोटबंदी हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया, उसके बाद आज तक स्थिति क्या है कि नकली नोटों का प्रचलन बंद हुआ, उससे अधिक नकली नोट आज बाजार में आ गए। धन्यवाद। सभापति महोदय, जहाँ तक उन्होंने मूल प्रश्न के संबंध में कहा है कि उत्तर सटीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने पूछा है वह उत्तर सभापटल बहुत ही सटीक रूप में रखा गया है खंड वाइज। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण हुआ है उसके बाद जाली नोटों के प्रचलन में भी क्या स्थिति आई है, बढ़ी है या घटी है। तो जाली नोटों का जो एक तरह से प्रचलन है, जिसका जो कुप्रभाव देश पर पड़ता है, वह केवल आर्थिक स्थिरता के लिए ही खतरा नहीं है, देश में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। माननीय मोदी जी की सरकार संकल्पित है कि हम देश की अखंडता के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम किसी भी प्रकार के साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक नोटबंदी की बात आई है, उसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम आए हैं। नोटबंदी के कारण तो बहुत है, इस मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि इसके कारण जो काला धन था, काला धन को बाहर निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है और आज इसको देश और दुनिया भी इसको देख रही है। नहीं, बिल्कुल आज जिस प्रकार के काला धन और दूसरा जो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सल इलाकों में जिस काले धन का उपयोग होता था, वह एक बड़ी मात्रा थी और इस विमुद्रीकरण के कारण उस पर कमी भी आई है, विराम भी आया है। जहाँ तक जाली नोट के प्रचलन की बात है कि ज़्यादा आया है, ऐसा नहीं, इसकी कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन जैसे 17 और 18 के उदाहरण इसमें हमने उत्तर में दिया है, तो लेकिन इस पर सरकार की संकल्पित है। और जो जाली नोटों का, अगर यह क्वेश्चन का भाव यह है कि जाली नोट ज़्यादा अभी बरामद किए जाते हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपने संकल्प के अनुसार उस साजिशों को नाकाम कर रही है जो जाली नोट के प्रचलन को भारतीय अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री चौधरी साहब। कहते थे कि आखिर कितना प्रतिशत अब जाली नोट चल रहा है, नहीं बताया माननीय मंत्री, नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री पूछना चाहूँगा कि इस नोटबंदी को के बाद भी यदि जाली नोट नहीं रुक रहा है तो सरकार को, जो कल माननीय बजट पेश किया गया, माननीय मंत्री ने पेश किया, उसमें इन्होंने कहा डिजिटल नोट में अब जारी होंगे। क्या ये नोट, फर्जी नोट रोकने के लिए डिजिटल नोटिंग से लाभ मिलेगा या इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? जरूर लाभ मिलेगा। जहाँ तक कि इन्होंने कहा कि नोटबंदी और जाली नोटों का जो प्रचलन है उसमें कमी आई या नहीं आई है, मैं इनको स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कहा हूँ, अगर और विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि NIA अब तक FICNA के 12 केस दर्ज किए हैं और उस 12 केस में जो पाकिस्तान के 21 केस थे और अब तक उसमें 291
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 108 दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जब सरकार इस प्रकार की जांच करती है, एफआईआर करती है, ठोस कार्रवाई करती है और गिरफ्तारियां होती है, तो निश्चित रूप से जाली नोट के प्रचलन व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास होता है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कभी कमी आई है तो हमारे ठोस निर्णय और कार्रवाई का परिणाम है, कभी बढ़ती है तो हमारी जो प्रक्रिया है उसको रोकथाम के लिए तो हम उसकी बरामदी भी ज्यादा करते हैं। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई जी फ्रॉम लोकसभा। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रतिशत की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो एनआईए जो इसकी जांच एजेंसी है उसके माध्यम से हम इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो प्रश्न है, बहुत प्रश्न इनका वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। श्री माननीय अनिल देसाई जी बैठकर बोले, आवाज आएगी, बैठकर बोले प्लीज। थैंक यू चेयरमैन सर। डेप्यूटी चेयरमैन सर, सर in the chart which has been given by the minister, if you go by the chart, the progressively recovery of the notes is being shown. My question to the minister through you is, when after demonetization, when the new bill was introduced, government through RBI had made it categorically emphasized that security features which are embedded in the new bills, they will never be able to compromise by the counterfeiters. To ward off whatever attempts were being done earlier before the demonetization and why the demonetization has taken place, to keep off terrorists and that easy accessibility to duplication of the notes and all. Now that, I mean, this is progressively going higher and higher, barring... Please put your question briefly. My question to the minister is, what measures are being taken? Because if minister, what he is saying in the reply given to the earlier colleague, that attempts are being made to see that this is covered, what exact measures, because this is playing with the internal security, please, internal security Mr. of the nation. This is a very important question, sir. Let me ask. I know, but... what measures are being taken? I mean, it is not that, I mean, what answers are being given by the minister. Please be brief. Not, what measures are being taken to put full stop to this, to curb this menace. Thank you. सभापति महोदय, इसके लिए सरकार व्यवस्था की है और कानूनी उपाय भी किए हैं। जैसे कि जाली करेंसी नोटों को बनाना, उनका उपयोग करना, रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 क से अंगत के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत हम काम करते हैं। इसको एनआईए एक्ट के तहत इसे अधिसूचित अपराध में बनाया गया है ताकि इस पर रोकथाम की जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले FICN संबंधी अपराध को वर्ष 2013 में UAPA के तहत आतंक की श्रेणी में लाया गया ताकि उसका हम विस्तृत जांच भी कर सके और रोक भी लगे। संस्थागत उपाय भी इसके रोकथाम के लिए किए गए हैं और गृह मंत्रालय ने इसके लिए CFT बनाई है जो आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए है। एनआईए को FICN के मामलों को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने FICN के मामलों को प्रभावी समन्वय और तत्काल सूचना साझा करने के उद्देश्य से FICN समन्वय केंद्र भी बनाई है। 2014 में भारतीय मुद्रा के सिक्योरिटी फीचर की गुणवत्ता में भी सुधार किए गए हैं ताकि जाली नोट की छपाई नहीं हो सके। इस प्रकार से संस्थागत भी उपाय किए गए हैं, कानूनी उपाय भी किए गए हैं और समय समय पर इसका समीक्षा भी होती है और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। धन्यवाद। माननीय महेश पोद्दार जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, my question is, whether the government maintains data on such counterfeit notes that have been recovered around the border areas and the country-wise particularly. If so, what measures are being taken to improve the recovery from such countries from where the migration is more? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। उसकी निगरानी एक तो सीमा पर चौकसी बरत के जो हमारी वहाँ फोर्सेज लगी है CAPF की, उसके माध्यम से भी करते हैं। दूसरा कि कई प्रकार के प्रशिक्षण भी हम लोग बैंकों को देते हैं और जहाँ तक इन्होंने कितने जाली नोट पकड़े गए इसका आंकड़ा जो बता रहे हैं, यह ब्यूरो के रिकॉर्ड में अंकित है और इसमें भी है। अगर वर्षवार जो हमने उत्तर में टेबल पे दिया है जो 5 वर्षों का है
उसके लिए उस टेबल में देखा जा सकता है। और खास करके यह जो जाली नोट है, यह पाकिस्तान के साजिश का एक प्रयास होता है और यह पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया में प्रवेश करने की प्रयास भी होता है। बांग्लादेश से भी आते हैं और लेकिन बॉर्डर पे भी, और बॉर्डर के अंदर किसी प्रकार से वह प्रवेश भी करता है, तो राज्य की भी एजेंसियां काम करती है और केंद्र की भी एजेंसियां काम करती है और उसमें हमको कामयाबी भी मिलती है। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। सभापति महोदय जी, बड़ी चिंता का विषय, मैं सिर्फ एक फिगर्स जान के माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जवाब जानना चाहता हूं। कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि भाइयों बहनों, ये जो जाली नोट है बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब 2000 के नोट्स 4,67,346 पकड़े गए जो नए नोट है। 500 के नए नोट्स 2,97,372 पकड़े गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कहते हो कि हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कैसा प्रयास चल रहा है कि हर साल जाली नोट कम होने की बजाय आपका टेबल दिखा रहा है कि 2019 में 2000 के नोट्स 90,566 पकड़े गए थे, वो कम नहीं हुए, बढ़ के 2020 में 2,44,834 हो गए। माने बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आप कहते हो तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान की साजिश करते रहे और हम सीना तान के बैठे रहे? क्या कोई आपके बड़े लोग जाली नोट नेपाल से या बाहर से आए उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं, उसकी जांच करवाना चाहते हो या नहीं? प्लीज क्वेश्चन। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा हूं कि इसकी प्रवृत्ति अस्थायी नहीं है। अगर जिस वर्ष के आंकड़ों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि 7, 17 और 18 के भी आंकड़े देखें कि 17 के अलावा 18 में कम हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ज्यादा जाली नोटों की जब्ती यह भी एक शो करता है कि हम कार्रवाई तत्परता से कर रहे हैं। तो हमारे कार्रवाई का भी परिणाम है कि जिस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास को विफल करने को भी यह प्रतीत कराता है कि जाली नोट ज्यादा से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। और जाली नोट के वर्ष वाइज आंकड़ा भी दिए गए, तो कभी कमता है कभी बढ़ता है। 2019 की 20 की बात उन्होंने किया है, तो टेबल में 2017 और 18 के टेबल में भी आंकड़े को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका अस्थायी प्रवृत्ति नहीं है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 श्री टी.जी. वेंकटेश जी। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। My question first supplementary. Sir, my first supplementary question through you to the Minister, Home Minister. Sir, after bifurcation of Andhra Pradesh, Telangana, newly formed states, sir, they used the electricity power supplied by Andhra government, Andhra Pradesh, and they have not paid the bill, sir. They have to pay more than 3,000 crores. If you calculate the interest around 6,000 crores, they are not showing any interest for the payment to the Andhra government. Whether government of India, whether they can deduct their payments and pay to the Andhra Pradesh, any working out that way they are Thank doing, you. sir. Thank you, Venkatesh. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, केंद्र सरकार चिंतित भी रहती है और प्रयास भी करती है कि पूरे देश के समग्र विकास के साथ साथ तेलंगाना और क्या नहीं आप जवाब दें। नहीं, हमको बहुत मानते हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, तो अभी भी हमको निमंत्रण दिए कि एक बार आकर हमारे यहाँ भोजन। आपस का रिश्ता हाउस के बाहर। प्लीज माननीय मंत्री जी जवाब। तो सरकार चिंतित है कि पूरे देश के समग्र विकास के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी विकास हो। एमएचए इसमें एक नोडल एजेंसी है और नोडल एजेंसी के रूप में यह कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसके जो अनुसूची 12वीं है उसमें विद्युत से संबंधित विषय इसमें जो डाले गए हैं, तो जो उसके भुगतान का, बिजली बिल के भुगतान का मामला है, निश्चित रूप से यह एक राज्य से दूसरे राज्य का है।
मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की समस्या बीच बीच में भी आती रहती है। कई तो इसके निर्णयों को लागू किया गया और कई निर्णय ऐसे हैं जिस पर दोनों की सहमति नहीं बन पाती है। तो इस बिल के संबंध में अगर सहमति नहीं बनती है, भुगतान नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार जरूर गृह मंत्रालय की ओर से वहाँ के इस स्थिति से अवगत होकर आगे अगर कुछ स्थिति उसकी बनती है तो उसमें चूंकि हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते, तो उस संबंध में अगर कुछ सुझाव होगा तो हम उसको भेजेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री To you, sir, the Andhra Pradesh Srisailam Dam we have, sir. The Telangana government, they have power project downstream of the Srisailam project. They are not disciplined, sir. They are using the downstream, they are using the water for power generation, irrigated water, for irrigation purpose water. They are illegally, they are drawing and they are making the power, sir. This is not acceptable, and Home Ministry has to take immediate steps, and they should please put your collect that much quota future. They should stop that water, sir. Thank you. देखिए, मैं पहले बताऊं कि हम कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और यह जल शक्ति मंत्रालय इस विषय को विशेष रूप से देखती है, लेकिन दोनों राज्यों की समस्या जब इस प्रकार से आती है और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से अगर कोई बिजली उत्पादन की बात आती है तो उसमें निश्चित रूप से इस परियोजना के अंतर्गत जो बातें आती हैं, इसके लिए भी जब हमारे गृह सचिव के स्तर से अभी तक 26 मीटिंग हो गई है और अगर इस प्रकार की कोई बातें हैं जो माननीय सदस्य ने रखा है तो आगे की किसी भी इस प्रकार की मीटिंग में इस बात को भी दोनों राज्यों के सामने रखेंगे। धन्यवाद। श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, प्लीज। I'd like to ask the Honorable Minister about the capital of the state of Andhra Pradesh. There is a lot of confusion that was created by the state government when they sought to create 3 capitals. Then subsequently that legislation was withdrawn. But the central government has sent some communications addressing to Hyderabad. So these have all been circulating in the media and social media. While we all know Amaravati continues to be the capital, we would like to have the minister to clear this confusion for once and for all as to what is the capital of Andhra Pradesh as of today and who has the authority to decide on the capital issue. Thank you. महोदय, राजधानी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य को ही है। 23/4/2015 के अनुसार आंध्र सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित की थी, लेकिन जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश ने एक अधिनियम के द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां अधिसूचित की: अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इस चीज़ को, एक जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई कि इसको वापस ली है और कही है कि इस समीक्षा के तत्पश्चात हम इसका निर्णय लेंगे इस तीनों राजधानियों के संबंध में या एक राजधानी के संबंध में। लेकिन अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य सरकार ने अधिसूचित की। धन्यवाद। माननीय वी विजय साई रेड्डी। The Honorable Minister, sir, the legal division of the assets valued 1,42,601 crore belonging to the institutions listed in Schedule 9 and Schedule 10 of AP Reorganization Act of the and also of the institutions not mentioned in the Act also has not happened so far, and it is the responsibility of the central government to ensure that Act is implemented. This has hampered their functioning and has an adverse impact on the Andhra Pradesh. Is the ministry taking any steps to expedite the division of such assets? And my colleague, Honorable Manya Ramesh ji, was the author of this AP Reorganization Act. Thank you. At that point of time. Thank you. Thank you. महोदय, 9वीं अनुसूची में के अंतर्गत संस्थान है
और इसके निपटारा के लिए एक शिलाभिरेख कमेटी भी बनाई गई थी। 90 संस्थानों के संबंध में शिलाभिरेख कमेटी ने अपनी संस्तुति दी है। जो प्राप्त हुआ, तेलंगाना ने 90 में से 68 संस्थानों की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन आंध्र प्रदेश इन 68 में से 33 संस्थानों पर सहमत है। आंध्र प्रदेश समग्र हल के पक्ष में है, जबकि तेलंगाना केस बाई केस सिफारिश को स्वीकार करने के पक्ष में है। यहाँ कुछ विवाद आते हैं। 10वीं अनुसूची में प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, तो इसके तहत 112 प्रशिक्षण संस्थान केंद्र वर्णित है। धारा 75 के अनुसार इसके विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है और आंध्र प्रदेश इन्हें जनसंख्या के अनुपात में विभाजित करना चाहता है तथा तेलंगाना स्थान के आधार पर। अटॉर्नी जनरल के अनुसार विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी चाहे 10वीं अनुसूची हो, 9वीं अनुसूची हो, चाहे इसके अलावे भी जो भी संस्थान या इकाइयाँ हो, उसका समाधान के लिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय बार बार यहाँ से निर्देश देते हैं कि आपसी सहमति बनाई जाए। आपसी सहमति के आधार पर ही इस पर कुछ निर्णय हो सकता है और हम तो सिर्फ समन्वय का काम करते हैं, हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सुझाव आते हैं या कुछ दोनों राज्यों की तरफ से कुछ बातें आती है तो उसको गृह मंत्रालय कोऑर्डिनेट करके दोनों स्टेट के सामने रखती है। जहाँ तक मैं इसलिए केंद्र सरकार की जो चिंता है, पुनर्गठन के बाद आंध्र राज्य को 2014 के उपरांत भारत सरकार द्वारा कुल 65,730 करोड़ की राशि जारी की गई और पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य को 2,385 करोड़ की राशि जारी की गई, जो विभिन्न संस्थाओं और राजधानी शहर की सहायता, सिंचाई परियोजनाओं से लेकर कई तरह के राजस्व घाटों के अनुदान के मामलों में भी और जो पिछड़े राज्य हैं उसको भी प्रत्येक वर्ष हम उसके विकास के लिए देते हैं। इस प्रकार से प्रयास होता है, लेकिन हम समन्वय का ही काम करते हैं। धन्यवाद। माननीय श्री सीएम रमेश जी, माननीय श्री सीएम रमेश जी, देयर आर अदर वेज फॉर दैट, प्लीज। माननीय सीएम रमेश जी। State has been bifurcated last 8 years back. It is there in the act, so many issues. These issues now, Telangana state and Andhra, some common properties, public sector undertakings and all. And some money also there is in the deposit in the banks. Recently we have seen in the media, both the chief secretaries, home ministers called and had discussion, home secretary. And that also, how many issues are there, how many issues has been settled. I'm asking the Home Minister has to take initiative. Both the Chief Minister have very good relations. They were discussing their issues, but why Telangana issue, Andhra issues, they have to sit and settle. And every time they are telling we have very good relations. Please. Now I'm asking the Government of India, if instead of calling secretaries, both Chief Minister also has to call and settle these issues. Please put your question. Yes, Thank you. सभापति महोदय, काउंसिल की मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी ने भी दोनों राज्यों से यह आग्रह किया है कि दोनों राज्य जो भी विवाद के मुद्दे हैं उसमें आपसी सहमति बनाकर दोनों इस मामले का निपटारा कर लें। कहे कि कुछ चीज़ों पर निर्णय हुआ, कुछ चीज़ों पर निर्णय नहीं है और निर्णय दोनों राज्य की सहमति से ही होनी है। तो इनका अच्छा सुझाव है कि दोनों राज्य बैठकर सहमति बना लें और हम लोग भी यही चाहते हैं और बार बार इसका एमएचए के द्वारा प्रयास भी होता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी। माननीय मंत्री, टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय विनय विश्वम जी। Sir, I raise a very serious issue which affects the women of this great country. The sexual violence within marriages. Sir, I am very sure that the Minister herself is aware of this fact. In Section 3 of the Domestic Violence Act, it is defined what is domestic violence. It includes harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person
or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, and such abuses. Thank you. Sir, the abuses are taking place even inside the marriages. You have to be brief in your question, Viraj. No, sir. Please. You allowed everybody to take their own time. Please, this is a very serious issue. Please, sir. Sir, when we come to section 375 of the IPC, the strength and the vitality of this definition is eroded. It says that a man... Mr. Vishwam, you have to be brief in your question, yes, please. No, in section 375 of the IPC, when rape is defined, the sexual abuse inside the marriage is exempted. It says that